refrain from making such a outlandish statement. Yes, we say this is a good stock and it's good or bad for a portfolio. That's it. Got it. But Got it. talking about indexes, I don't know. It Got it. Got it. it can Got it. uh, 20,000 also, and it can 13,000 also in 2 months. So, Got it. our primary you are saying is that you are bullish by nature, and Right. the downside you see is how much, Rachit? Sir, downside, I will let you know in some time that what is the downside, that maximum that I'm seeing. But if you are talking for next 10 days, the level Yeah. that I am looking at is 17,400. That is the level that Nifty should touch in next maybe week. This is what my view is. Oh, 17,400 should come soon. okay. Thank you very much, Rajit. Hope you have. And sir, Yeah. can I talk about you also talked about stocks. I have four stock or sector ideas also, where I think that one is a sell, which is priced to No, no, perfection, no, and three no, are no, on no, buy. no, 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 just a moment. If you want to talk about stocks, Right. it will be only FNO stocks. F and O. It is F and O. Yeah. So my view is regarding Titan. Mm, That I believe is priced to perfection. Why I come to this number is that, let's say, there are 1 crore weddings happening in India, and the jewelry buying that happens in India is mostly on account of the wedding. And there are 1 crore wedding happening in India every year, and 10 lakhs is the average budget of that wedding. Out mm, of that budget, around 30 to 33%, 30% of the wedding budget actually goes to the jewelry part, because this is why I'm saying, because based on my own wedding experience. mm, So roughly 3 lakh crores is the market that, or 3 lakh 30,000 crores is the total overall market of jewelry in India at current 10 lakh rupees average, if I am assuming. mm, So Titan is almost at that particular market cap level, and even if it captures 100% of that market today, we are almost there. So in my view, that stock is the one that is priced to perfection, and I think it should not be. I believe I will sell that and buy Indian hotels instead of that. And I have a view of Indian hotels as well, that why I will be buying that and what is the thing that I'm seeing. mm. Well, if you हाँ allow, I can say that about Indian hotels हाँ, also. बोलो 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 बोलो. So my Indian hotels thesis is that there are 1 crore weddings happening, as I told you. Out of that, 2% of the weddings in India are where the budget size is around 1.5 crores, and Mm, all I need is Indian hotels to account for 3,300 weddings of out of those 2 lakhs. That is 1.65%. If this happens, Indian hotels can garner a total revenue of 4,000 crores to 5,000 crores, mm, and 4,000 crores to 5,000. This wedding market in hotels is a very high margin business. So mm, this can translate current Indian hotel revenues also, I think 4,000 crores or 5,000 crore number only. So this can basically double up their revenue, and the overall margins will be very very high in this new business. So I see that if Indian hotels is able to execute it well, it can easily generate a 2,000 crores profit run rate every year from mm. here on, and which I think is not priced in the market as of now. So my trade is basically sell Titan and buy Indian hotels. Good. Now, you want me to say something? Yeah, I mean, sir, I have shared the idea in front of the forum. Anybody can speak anything on that. Okay. Indian hotel, since SARS was there, SARS, it was a disease like bird flu, which came in 2003. I picked up Indian hotels then. It was available dirt cheap, like uh, presently 25-30 rupees. Thereafter, Right. since it has not done anything, the high was 160 rupees for uh, so many years, for 20 years.
And what you are talking of this marriages and all, it is always there. Marriages were always there in India and they will keep on happening. Now, how much it fructifies into the balance sheet as you are calculating is a bit doubtful because most of the hotels of Indian hotels are now on management contracts where the margin is very less. They manage the hotel and they take a percentage. So, your uh, thesis can be right, but at 40,000 crore market cap, there is not much scope, and it's what? Sir, there are Take other minute, things take like minute, Royal. take minute, take minute. It is six times two sales max. It can go to eight, nine, and yeah. What you were saying? Sir, my trade is based on other hotel themes like Royal Orchid and all that are available at 400 crores, 500 crores market cap. They also have very, very good properties, pan India brands. Like, and they are also big beneficiaries of this wedding trend. हम्म, हाँ तो ले लो अच्छा रहेगा 2-3 साल पकड़ के रखो वापस इधर आके बोलेगा वो कुछ होता ही नहीं है होटल इज अ डड बिजनेस ओके नो होटल विल मेक यू रिच फॉर श्योर हाँ कुमार भाई क्या बोलते हो So, Rachit bhai, I would just like to, give my views of my experience of 29 years into market. Hotel industry and airlines will never make money. The money which manufacturing will make. I hope if you remember, Leela Hotel was listed. It was a big pomp and show and all. Ultimately collapsed. There are various airlines, Modi Loof, Damania, NEPC. List them. History tells you hotels and airlines will never earn money for you. That's all. Thank you. ओके रचित थैंक यू वेरी मच आदित्य प्लीज आदित्य श्योर आदित्य भाई बोलिए ना नहीं बोलना है आनंद भाई आप आइए ये सर विपिन था ना सर। हम्म, हाँ बोलो बोलो आनंद भाई बोलो अब बोलते नहीं हो सर नीलेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर बोलिए वो स्पीकर पे कीजिए ना उनको, वो लिसनर है सर। मैं बोलूँ क्या? नहीं हाँ नहीं है स्पीकर में। शरद भाई, हाँ बोलिए मैं बोलूँ? हाँ बोलो हाँ बोलो बोलो तो यूएस मार्केट ने शरद भाई टॉप बना दिया है और अपने यहाँ हम्म पे वीकली स्पिनिंग टॉप बना है। तो हम्म लास्ट वीक में जो भी लोगों ने लिया है वो फंस गए हैं और यूएस मार्केट में हम्म भी फंस गए हैं। तो यहाँ से मेरे को हम्म 5 से 7 वीक का करेक्शन लगता है और हम्म 5 से 7 वीक का करेक्शन इट कुड बी जैसे हम लोग ने 18,100 का नया ये लोअर लो बनाया था, प्रोबब्ली 18,000 का भी लोअर लो हो सकता है एंड हम्म we can go all the way down to again retest 15,200 probably make new low। तो ये मेरा थीसिस है हम्म फॉर नेक्स्ट 5 to 7 weeks। तो मैं 4-5 हम्म दिन का व्यू नहीं है मेरा, 8-10 दिन का व्यू नहीं है। और हम्म प्रॉब्लम जो निकल के आएगा वो यूरोप से है और दूसरा है अमेरिका से। नेचुरल गैस के प्राइजेस वहां पे बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन का खतरा हमेशा रहने वाला है। अगेन द कमोडिटीज जो है वो ऊपर जाने का चालू हो गया है। स्पेसिफिकली दूसरा एक जो प्रॉब्लम दिख रहा है वो चाइनीज युआन
वो 6.86 आ गया है, जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ। और वो 7 के ऊपर निकल गया तो एशिया में भी क्राइसिस इसका रिफ्लेक्ट होएगा। अपना डॉलर भी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 81-80 का मेरा टारगेट आ रहा है। 78 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और निफ्टी का बोलेंगे तो 18,100 के ऊपर नहीं लग रहा है। पहला टारगेट 16,800 रहेगा, उसके बाद 16,200 रहेगा, एंड देन वी विल टेक ऑन फ्रॉम देयर। तो ये मेरा ओपिनियन है सर। एंड अभी किसने बताया यहाँ पे टाइटन पे बुलिश है, मेरा एक्चुअली बेरिश व्यू है उस पे। नहीं नहीं, वो बुलिश बोला था। हाँ, अरे बेरिश नहीं, बेरिश बोला था वो। बेरिश बोला था, अच्छा ओके वो ओके। वो बोला कि टाइटन बेचूंगा, इंडियन होटल लूंगा, हाँ, तो मेरा ऐसा। मेरा बेरिश व्यू है। मैं एक साइकोलॉजी सर समझाता हूँ मैं आपको। आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ। आप तो माहिर हो, बहुत बड़े खिलाड़ी हो, लेकिन ये जो आरजे का इवेंट हुआ ना सर, आरजे के इवेंट का जो लो था ना, वो उसने मार्केट तोड़ दिया है उसने। व्हेन आरजे एक्सपायर्ड, निफ्टी का जो लो था ना सर, वो 17,000 कुछ 750 या 800 ऐसा कुछ था। तो वो वो लोग ने जो भी जितने भी ऑपरेट किया है निफ्टी को, ये मेरा साइकोलॉजी समझने में आता है वो, कि आफ्टर द आरजे इवेंट उन लोगों ने मार्केट को ऊपर रखा, दूसरे दिन सिंगर का नोटिस डाल दिया, तो पब्लिक ने जो भी मंदी किया था वो मंदी में फंस गए और उन्होंने काटा। और जो लॉन्ग थे उन्होंने और लॉन्ग किया। शायद किसने सपोर्ट भी किया होगा, मे बी फ्रॉम द गवर्नमेंट, और आई डोंट नो, बट वो अभी लो तोड़ दिया है। तो हम लोग को ये जो फैक्टर है आरजे इवेंट, वो बड़ा फैक्टर है मार्केट के लिए। तो 850 का लेवल, यानी निफ्टी का 17 850 का लेवल, मेरे हिसाब से उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, और धीरे धीरे नीचे हम लोग जाएंगे। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। आई एम। नहीं, अभी हाँ ये अभिषेक को कुछ बोलना है। हाँ हाँ। क्या बोलना है अभी? हाँ सर, ये जो नीलेश, हाँ, अरे इनका पॉइंट बहुत ही लाइक एब्सोल्युटली सेम व्यू इज व्हाट एवर आई एम थिंकिंग, looking at the longer term perspective of let's say 6 to 8 weeks, or probably let's just take it as till the year end, because ये अभी ऐसा हुआ है कि sometimes I feel it's like a deja vu। जो 2008 का स्ट्रक्चर बना था, मैंने काफी बार पोस्ट भी किया है कि वही लग रहा है करके, वो पॉसिबिलिटी पूरा होने का अभी और ज़्यादा ये है, बट द थिंग इज यू कैन नॉट रियली गेस द स्पीड ऑफ द मूव, तो यू शुड जस्ट स्टे पुट अंटिल योर टारगेट्स आर देयर। ये वैसा वाला है कि इट विल गिव यू मेजर पुल बैक्स और ये सब तो देगा ही देगा, देन योर मेजर पोजीशन शुड स्टिल रिमेन लाइक दैट। ऑफ कोर्स ये सब होता रहता है ऊपर नीचे, दैट इज व्हाट दिस इज कंसीडर्ड एज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड कंटिन्यू, बस वही है। हाँ, तो एंड अभिषेक जी, 850 के ऊपर निफ्टी 17 850 के ऊपर नहीं लग रहा है। और दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट ना, जो जो आपने वो आरबीआई वाला बताया था, तो आरबीआई वाले लो के नीचे देयर इज नथिंग टू होल्ड इट टिल 17,000, क्योंकि उसके नीचे तो पूरे गैप से लेके लेके गया है। सो वेयर हाँ एवर द गैप्स आर द मोस्ट, नहीं नहीं वहां पे। नहीं, चलो चलो चलो, बहुत हुआ। ये जो ये जून महीने का रिजल्ट आया ना, हेलो, हाँ, वो ठीक नहीं था। बहुत बराबर है। सारा कंपनी, अभी दोबारा रिजल्ट आएगा सितंबर का। सितंबर में रिजल्ट आए, अरे सितंबर एंड का रिजल्ट आएगा, वो और खराब होगा। जिसका पता मार्केट को है, इडियट्स लोग को नहीं मालूम है, मार्केट को है कि रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी बैड। सो नीलेश भाई, डिस्काउंटिंग अभी से चालू हो गया है। यू विल सी मेजर मेजर फॉल्स इन लॉट ऑफ काउंटर्स। सो बी प्रिपेयर्ड। ये आप जो ये बोलते हो ना, 7 वीक 9 वीक जो भी बोला आपने, तो हाँ, it coincides with the results. ओके ओके। So you are making a point, but you are not aware of what you are talking and why it is right.
Okay, The okay. effect So will be it. The good. effect will be there, Huh, but the reason is this. It I is got in your your point. mind. Yeah, I very. got your point. और सर दूसरा जो अपना जो रैली था वो पूरा यूएस का रैली था वो क्वांटिटेटिव ईजिंग का था अभी वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट और बढ़ रहे हैं प्रोबेबली हाउसिंग रिलेटेड प्रॉब्लम चालू होगा तो दिस फॉल वुड बी अगेन रिलेटेड टू जियोपॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल में सर ईटीएफ का पैसा बाहर निकलेगा ना तो बहुत बड़ा धुलाई होएगा सर तो मेरा पर्सनल व्यू है ये आई 17,000 850 और 18,100 ये क्रॉस नहीं करना चाहिए तब तक सेफ है नीचे में मैं बुल भी था मैंने नीचे बोला भी था 15,700 800 पे बिलोंग करने के लिए ये शायद आपके स्पेस पे ही बोला था मैंने तो ठीक एजियो, है सर क्या बोलना चाहता है भाई? तू हाथ ऊपर करके खड़ा है। थैंक यू सर, थैंक यू हम्म, सर, थैंक यू सर। सर ये जो मेरे को नीलेश सर की बात का काउंटर व्यू है मेरे पास, वो हम्म, कहना था हम्म, सर। जैसे निफ्टी अगर इंडियन मार्केट अपने इन रुपीज में देखा जाए तो सर हाई से सिर्फ 3-3.5% नीचे पड़ा है। हम्म, लेकिन अगर सर यही चीज अपन डॉलर के फॉर्म में देखते हैं तो डॉलर में उसने हाई बनाया था $250 का और अभी चल रहा है $225 पे। हम्म, 8% डाउन है सर मार्केट, हम्म। अगर डॉलर फॉर्म के अंदर। सर मेरा इधर का व्यू ये है कि मार्केट अभी यहाँ से और ऊपर जा सकता है। जैसे सर ने नीलेश सर ने वो ये बोला कि टॉप बन चुका है और जो जिन्होंने लास्ट वीक बाय करा वो ट्रैप हो गए। अब उसमें सर मेरा काउंटर ऐसा है कि मेरा माइंडसेट है, मतलब कि हो सकता है कि लास्ट वो फ्राइडे के दिन जिनने शॉर्ट करा वो ट्रैप हुआ। मार्केट को इवेंचुअली अगर नीचे जाना है तो जरूरी नहीं है कि वो अभी चले जाए। मेरा ऐसा है कि वो यूएस का जो $250 का जो हाई है उसको ब्रेक करेगा, उसके बाद नीचे जाएगा। ठीक है, तो हाँ सर देखते हैं बोलिए। ना। वो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होएगा, पता चलेगा। नीलेश भाई को आता है कि नहीं आता है, कि तुमको आता है कि नहीं आता है। नहीं नहीं विल सर, कम टू नो। इस टाइप का व्यू नहीं है सर। मैं तो सर वैसे भी 16-800 के नीचे शॉर्ट करना पसंद करूंगा। इधर तो मैं शॉर्ट की मतलब मैं सोच नहीं रहा हूँ। पर शॉर्ट क्यों करना है भाई? छोड़ो रे। नहीं नहीं सर, निफ्टी नहीं, मैं निफ्टी नहीं करता हूँ सर। मैं भी नहीं, मैं नहीं करता। सर, मैं भी नहीं करता हूँ, निफ्टी नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब निफ्टी का व्यू था ये। What what मैं Nilesh Bhai मैं said, सर इंडिया बुल आरबीएल करता हूँ। what Nilesh Bhai said looks like a top. It did not cross 100. So this is the third attempt. Now, do you agree or you don't agree? सर आई डोंट एग्री, Hmm? आई डोंट एग्री सर। Okay. ओके So you सर। you mean to say the markets will go up, right? इट मे गो अप, हाँ, इट मे गो अप। तो फिर सर यार शायद कोई नहीं, नहीं, तो डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं है ना। आप बोलते हो कि 18,100 के ऊपर जाएगा, फिर बोलते हो इट मे और विल। नहीं सर, बोलो ना, मेरा मतलब क्लियर सर के ये है बोलो सर। ना। अच्छा, मैं सर 18-100 की बात नहीं कर रहा सर। मेरा व्यू ऐसा है, मैं डॉलर फॉर्म में देखता हूँ मेन। मेरा ऐसा है कि 225 पर है, देखो, 250 का देखो, हाई है। देखो, 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 आप कुछ भी देखता होएगा, ओके। राइट यहाँ सर। पे जनरली सब लोग क्या देखता है, वो मायना रखता है। तुम क्या देखता है? हम वो हमारा चार्ट में हम देखते रहता है 2200 आएगा, 2200 आएगा, मतलब नहीं है ना। कुछ बराबर होना चाहिए ना। आप एक बात बता दो आजियो, 18,100 के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? सर जाएगा। ओके, गुड। ओके। यस, अभिषेक। Hey, as your hunt, that's a very interesting point you made actually. So, I just wanted to do me one favor, okay? You just have to compare what your Nifty divided in dollar terms is doing. Compare that with SPX.
or Dow Jones. It's the same chart. Right. That's one. But देखो, there's some similarity. There's some hints you can get. नहीं नहीं अरे राइट यार, मैंने वो मैं क्या बोलता हूँ, इधर इतना सारा, तो आनंद जी, इतना हाई लेवल का डिस्कशन मत करो नहीं यार, बोलो ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, काय को मगज मारी और ये वो। अभी आनंद भाई बोलेगा, लो एक राइट टाइम है आनंद भाई के लिए। अरे आवाज आ रहा है सबको? अरे एकदम कुछ। हेलो, एकदम हाँ हाँ ओके ओके। पहले नहीं, ट्राइंग टू स्पीक हो नहीं रहा था। ओके, बस पिछले 10 महीने से एक ही बात चिल्ला रहा हूँ, 14,200 लगाने से पहले ये मार्केट नया टॉप नहीं लगा सकता। दैट इज स्टिल माय व्यू एंड आई विल कंटिन्यू टू होल्ड दैट व्यू। Now, I 19th August, which was also my birthday, it was a very अरे important day. कंग्रेचुलेशन एवरीबडी फ्रॉम एवरीबडी। थैंक यू। एंड दो दिन पहले भी ट्वीट किया था कि 18 को साइडवेज करेगा, ऊपर नीचे करेगा और 19 को गिरेगा। एंड एज एक्सपेक्टेड 19 को रिवर्सल दिया और बढ़ा दिया। मोस्ट प्रोबेबली मंडे मॉर्निंग इट विल ओपन विद a gap down and that gap down will not get filled. This market is heading lower, lower and lower. We are looking at 14,200, which is my first target. उसके 14,200 लगाने से पहले ये पैटर्न कंप्लीट ही नहीं होता है। जब तक पैटर्न कंप्लीट नहीं होता है, तेजी सोचना गलत बात है। एंड ये जो ऊपर आया, इट इज जस्ट अ क्लासिक बुल ट्रैप व्हिच इज गोइंग टू ट्रैप अ लॉट ऑफ पीपल अगेन। आप फंसे हुए हैं ऑलरेडी, अगर नहीं निकले तो और बुरा फंसेंगे, बिकॉज दिस टाइम decline is going to be very very fast. This has taken all the maximum time it can take. 19th August was the maximum time I was giving for the retracement pullback. Almost 8,000 एग्जैक्टली वही आया। मैंने ट्वीट भी किया है, एंगल बेसिस पे कैसे निकाला था ये टारगेट। एंड 18,000 वाज अ वेरी बिग हर्डल फॉर द मार्केट। एंड यहाँ से जो रिट्रेसमेंट हुआ है, दिस इज easily in the next 4 5 sessions you will see 1,500 points taken off. It is not a market where you should be long in anywhere. इससे पहले एक डिस्कशन हो रहा था इंडियन होटल्स का। इंडियन होटल्स हैज मेड अ क्लासिक इंडियन डायगोनल पैटर्न। यहाँ से स्टीप डिक्लाइन दिखेगा अगेन, ऑलमोस्ट इन अ वर्टिकल डाउनवर्ड फैशन। Watch out in the next 4 5 sessions. It is going to be really beaten stock. Third, rupee is very nicely stabilized between 80 and 78. That has formed a nice band और वहां से ब्रेकआउट करने तैयार है, पैटर्न तैयार है। अगेन ट्वीटेड ऑलरेडी, rupee is heading to 86 ultimate target. We should see 82 83 by December. This is ये सब मिला के इतना प्रेशर लगाएगा निफ्टी पे, निफ्टी एंड द मार्केट्स जनरली विल बी वेरी वीक इन द next week also and in the coming month September. By end of September you may see some little buying coming in, when traditionally सब बोलेंगे अभी सितंबर मंथ बहुत बेरिश रहता है and this is the time the market will go till down till the end of the year, but end of September we should see some buying coming in into the market again for a rally up. This rally may be again a short, small rally. Will not, should not go up to test again 18,600. 18,000 और 18,600 अभी लगता ही नहीं है कि आएगा for a long time. Coming to US Fed, Fed अभी फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, things are going to become more expensive, inflation is going to shoot up. All this is actually going to put in a lot of pressure. अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया और डॉलर का फेड का इंटरेस्ट रेट बढ़ा, then your dollar is going to become more expensive and that will make the Indian market very very unattractive for foreign investors. They will sell again. So watch out. This is not the time, this is not the area to be bullish on the markets. That is all. Anything else, please ask.
अभिषेक, ये दीपक कर शेने दिया कर दिया कर सर दिया कर दिया इनवाइट। सर, कर दिया सर। और ये आदित्य शाह, अब बोलो ना भाई, आदित्य शाह बोलो ना। सर जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण, बोलिए। सर 2-3 चीज है जो मेरे को बोलना है आपको। हम्म, एक तो जो लास्ट बार का जो रैली था ना, हम्म, उसमें और अभी में 2 डिफरेंसेस है। एक तो जो कैंडल्स बने हैं बराबर, उसमें सबसे ज्यादा बुलिश कैंडल है, मतलब ग्रीन वाले विथ बॉडी। हम्म, और दूसरा ये बोलना है कि हम्म, जो लास्ट टाइम के जितने भी राइज थे ना, उसमें एफआई कभी भी बायर्स नहीं थे। हम्म, इस बार में एफआई बायर्स है। हम्म, और उसके सामने जो कॉन्ट्रा है वो ये है कि उन लोगों के स्टॉक के फ्यूचर्स में पोजीशंस नहीं है जो लास्ट टाइम में थे। हम्म, तो अभी कंफ्यूजन ये है कि एफआई कैश में बाइंग कर रहे हैं 2-3 हजार करोड़ का नॉर्मल। हम्म, जब वो सेलिंग करते थे वो 5-5, 7-7 हजार करोड़ की करते थे, हम्म, पर सामने पोजीशन बनाते थे फ्यूचर में नेक्स्ट मंथ में, ताकि वो लोग उसको ऊपर खींच सके। हम्म, पर इस बार उल्टा हो रहा है। तो हम्म, और फॉल इसलिए नहीं हो रहा है, इसका रीजन ये है कि सबको एक एक माइंडसेट हो गया है कि भाई नहीं नीचे जाएगा, मतलब हर रिटेलर 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर, 100 पॉइंट मार्केट ऊपर, 3-4% स्टॉक ऊपर, उसको शॉर्ट करो और विथ एसएल। तो उन लोगों के एसएल खाने के लिए दूसरे दिन गैप अप में ऊपर चला जाता है। अभी क्या हुआ, ये मेरे को लग रहा है, ये मेरा ओपिनियन है कि भाई अभी सब 200 पॉइंट 300 पॉइंट डाउन में बाय में चढ़ेंगे, क्योंकि उन लोगों को फोमो हो गया है बराबर का। और वहां से 400 से वापिस एक बार ऊपर खींचेंगे ताकि उनका फोमो और क्रिएट हो, और फिर वहां से घुमाएंगे मार्केट को नीचे, ये मेरे को लग रहा है सर। हम्म, और जब मैं मार्केट बोल रहा हूँ, मैं इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। मतलब सारे स्टॉक्स आ गए जितने भी एफएनओ में है, एक बार नीचे लाके 500 पॉइंट वापिस खींच लेंगे ऊपर, और फिर उनको एक बार बाइंग एवरेज जो पोर्टफोलियो माइनस है 10-20-30%, उसको एवरेज करने को बोलेंगे और फिर उसको वहां से गिराएंगे, ये मेरे को लग रहा है सर। ओके, एक बात बता दूं आपको। जी सर। ये इंडिया में 10,800 FII है, दस हाँ हजार आठ सौ राइट। तो उसमें कौन लेता है कौन बेचता है, यू कैन नॉट से। करेक्ट सर। ये जो FII आप बोलते हो, वो 10,800 लोग हैं। उसमें से कौन ले रहा है कौन बेच रहा है, आपको क्या मालूम, मेरे को क्या मालूम। राइट। It is incorrect to classify FIIs as a group. नहीं, ओके वो 10,800 जन है। कौन लेगा कौन बेचेगा किसको मालूम। अब पड़ेगा। ओके तो इतना ओवर सिंप्लीफिकेशन मत कीजिए। और वो स्टॉप लॉस खाने को आएगा ना, वो सब आपके दिमाग में है भाई साहब। कोई मेरा स्टॉप लॉस खाने को नहीं आता है ना, मैं किसी का खाने जाता हूँ। वो नेचुरल में होते रहता है। तो ओके ये जो सब बातें हैं ना कि ये पब्लिक तेजी में आएगा बाद में, ऐसा नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। ये जितना भी पब्लिक है उनका पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड्स, प्रेटी लॉन्ग ही है सब लोग। ये ओके क्यों आप सोचते हो कि वो FNO में ही आएगा तो ही तकलीफ है? वो तो म्यूचुअल फंड में भी आते रहते हैं ना। आई थिंक ये जो पब्लिक लॉन्ग है शॉर्ट है, वो सब बकवास का बात है। प्योर डिमांड सप्लाई पे ही चलता है और कुछ नहीं। तुम उसको ये नाम दे दो या वो नाम दे दो। ओके सर। शायद सर का आवाज मिस हो रहा है।
Yes, Anand sir. Yeah, actually, I see Deepak Shenoy. Hi, Deepak. I actually had a question for Deepak. Actually, I wanted his view on rupee dollar and the interest rate scenario in India. So, whenever you allow Deepak to speak, I would just want to tell Yes. Deepak I am looking to know about your views. That's all. Thank you. Deepak bhai, हाँ सर. you can hear. Can हाँ you hear बोलो. me? Yeah. नहीं नहीं, good. So I just landed on this place because I was driving back. So अभी हाँ, so I think my view on rupee, I don't have all the charts and all that, but Yeah. मेरा view here is RBI has been trying to protect 80, doing a very good job. Uh, they have lost significant amounts of, and they're continuing to reduce their amount of forex reserves in order to protect whatever outflow is there. So, Abibi, there is, I think, some kind of effort to protect against 80 getting breached too badly. But recently, pressure has come down. FIs have started to invest again. So, thoda, udhar mein there is this thing. There has been some problem. Hello. So I hope you can hear me. But the issue is largely now it comes to whether there is any more geopolitical problems. A big problem that will come, I think, right now. Geopolitical, ये बहुत मतलब बहुत macro है, but there is an issue in Europe where inflation is going to hit or is hitting very high numbers. They have not seen these numbers before. How they react may impact foreign flows in India. So temporarily there could be some pressure, but I feel if everything else is okay, within a few months we should see the resolution of this Russia-Ukraine problem, and when flows start to come back, I think India will be one of the places where flows come back. So rupee should be at least in better place. All I can say is there is currently no mad reason for the rupee to depreciate as it used to be earlier. Uh, but of course, everything is geopolitical. So abhi jo, whatever situation happens in Ukraine or China or whatever, that will impact us more than the fundamental nature of rupee. In fact, to me, the rupee should appreciate from here, not depreciate. Just speaking honestly, that's all. Anand had a question for you. Interesting, Deepak. You're looking at appreciating rupee. All right, okay. So that's why I always love to hear your views. Thank you so much. Though I was looking at rupee hitting 86 in a couple of years, in a year, but let's see. Okay, it's interesting. To be honest, today is not the time to predict rupee for a year. Yeah. Who knows? Uh, Maximum is 1 week. No? Yeah, but I do a lot of work in Russia and Ukraine and Russia both. So I was talking to some of the banking guys in Russia. Then they have already made up their mind that this war and this conflict in Russia and Ukraine is going to continue for at least 2 to 3 years. It's not going to abate at this stage here. And if that happens, and then the Chinese aggression to Taiwan, that will actually push inflation sky high. Now, these two things are the biggest worries for the forex because Russia is not going to give up so easily. No, but I think 3% depreciation per year is a given. Either which way Deepak Bhai agrees or not, or Anant agrees or not. I'm saying, on the whole, 3% depreciation is a given. As far as Uh, it might not It happen comes the in next. bunches. It doesn't come all at the same time. तो No, no. एक साल में 12% रहेगा, बाकी then 3-4 years it will Yes, stick around. yes. I agree with you. I agree with you. It's and lumpy. your and your view on the markets, Deepak? I don't know यार. I short term में
Everything seems fine. It seems, but every time when the market seems fine, only then they react. So I'm expecting something nasty that will come to the markets only in September. So everything else seems fine. It's not yet come to a point where confidently say bull run is solid and all that. But Yeah. I think more comfortable being bullish today than bearish. Things will change very rapidly. Of course, markets are like that. But I'm not going to, this is not a time I will, say ki leverage leke invest. It's not yet that time. But I also think, there is no uh, there's a lot of good things that seem to have happened in the last 2 quarters that have broken down a lot of stocks to much lower. So the stocks that are going up today in the Nifty are very different from perhaps the stock that took them up last year. Mm-hmm. So it seems to be a better fit. So I think stock specific stuff will actually see some really good moves in the market. Some stocks may, I mean, I don't know, yaar. I mean, to be honest, I'm still surprised that Adani stocks are still flying. वो अभी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है. So I mean, not a, Deepak bhai, in accept general. the fact. एक एक चार्ट भेजता हूँ दीपक भाई आपको. Surprisingly, because I study time cycles a lot, Nifty and the Dow both have been exactly repeating the 2008 pattern in terms of time. So somewhere down the line, the price also will come to match. So if that happens, it's a very interesting study purely from an academic point of view. If those two come in together, then I really am a little confused even today. If that happens, How is it the same? It's very different. Yeah, I was in 2008. I'm telling you, you saw two circuit days almost. no, no, Two time, time, consecutive time, time wise. If you take the time wise, the number of days from high to high has been 310 to 319 days. which So high to we which are high? maintaining every high to subsequent high. मैं आपको In चार्ट भेजता हूँ. 2000, okay. It's मैं very आपको different. चार्ट I भेजता mean, I was there in 2007. I can tell you it's very different. Feeling also. हूँ. To 2020 was similar feeling, but not 2022. But that's my feeling. Huh. Okay. I'll share the chat. It's very interesting. Let me share the chat with you, then we can talk some other time. Yeah. No, one thing I would like to say, this rally which started on 26th of July, this last month, is filled with lot of gaps. Lot of gaps. Agreed. And FI buying that is being touted is minuscule. Oh, ठीक है यार. There are 10,800 FIs. कोई ले लिया होगा. तो ऐसा नहीं है कि देर इज अ कंसिस्टेंट बाइंग. वो बेचता है लेता है बेचता है लेता है. सो what I'm saying is कि 16,400 you take it as a base, plus 1,000 points minus 1,000 points is the gap. 16,400 or 16,500 is the pivot. 1,000 up, 1,000 minus. That's the forecast for the year. Yeah, Nilesh bhai, you were saying something. Sir, one thing which is ignored is the Chinese yuan, reaching 6.86. Wo, personally, I see to going to 7.5. Now, if this happens, there will be again a turmoil which happened like in 2015-16. Yes. So I just wanted to update Deepak Bhai on this, sir. Apart from this Chinese yuan, lot of Asian currencies are acting very funny. I've observed it on Thursday. So somewhere, Divavai, not that I'm a bear or anything, I'm being neutral. We are in for a rough time. Yeah.
I don't know. Dollar rupee will touch 90 or 75. I don't know. But things are very, very fluid. Your guess is as good as mine. Yes, Amat. Sir, question to Deepak sir regarding the US 2-year, 10-year, and 30-year bond yields. Sir, what's your view? Actually, the bond inversion has already taken place. So, what's your target for 2-year bond yield for US? Hello. I don't have a target for 2 year. I don't think. I don't even trade those markets, so मेरे को पता नहीं वो किधर जाएगा. But the inversion in general depicts uh, a short-term increase in interest rates, but long-term stabilization. So that is why there is the fear of a recession. Ki short-term में increase करता रहेगा, there will be a recession, and then long-term rates will come down. That is why there is usually the bond yields predict a recession. But you have to notice now there is a very big difference between now and earlier times. The liquidity in the treasury markets has changed quite considerably in the last 2 years. The number of players playing treasuries has actually decreased, and the volumes have decreased. And that's one of the reasons why, even though the treasury yields have gone up quite considerably, both 10-year and short term, you have had no bankruptcies in leveraged bond players in the US. The general market is not over leveraged. So you're seeing a very different reaction to the US bond markets now than has happened before. So I would say within 2 years we should be past a recession. So the yield curve should have inverted or uninverted after that time, and inflation should come back to the relatively low levels after 2 years. So I think we'll again be in a situation of relatively low interest rates, and unless we have, I mean, I can't see 2 years in the future, but I think by that time all our current problems should have more or less been sorted. US will have inflation for at least another 6 to 7 months, which is way beyond what they can imagine. But after 6 to 7 months, things should become more normalized, and therefore interest rates, both by Fed and by the market pressures, should start to come down. So what is 3.5% perhaps today on a 10-year? I mean, that's a high, but it's now lower than that. Should normalize to more like the 2% levels after 2 years. But who knows? I'm not predicting right now in the air, but that's what the trajectory looks like. Thank Deepak you, sir. bhai, one related question. Dr. Mike Burry liquidated all his holdings except one. He went full uh, into liquidation mode. So, you, you agree with him or you don't agree with him? It's his money, sir. He can do what he wants, but uh, I mean, I won't liquidate my position. So वो कर रहा है बोल के मेरे को वो क्या क्यों किया रहेगा किसको पता है यार वो और उसका he has been wrong for a long time before being right the last time. The one Hmm. time that he has been substantially right, he was wrong for 5 years before he was fantastically right Hmm. in the big shot, and then he changed his position to saying, I will not manage external money, I will manage my own money. So his considerations for why he wants to do so could be n number, and therefore they may not apply to me per se. But I think liquidating entirely, it's like sounds like he may be willing to wait 3 to 4 years for a downturn, because last time he did that, he waited 3 to 4 years for a downturn, went short and waited. Now he may still be able to wait for 3 to 4 years for a downturn. I don't think I have that capacity, Hmm. so I would rather wait. मेरे को ठीक है यार, अगर 10% लॉस भी होता है, इफ आई हैव टू लिक्विडेट अ पोजीशन बिकॉज ऑफ बैड इधर फंडामेंटल्स और macro, then I want the macro to show me that things are bad before I do it, rather than predict it है right ना, now. So अभी बिल्कुल. तो कुछ नहीं Okay. हाँ. Okay. है. Trading DW.
Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Yeah. Sir, my view on index is simple, as I've posted few days back also. That Mm, my invalid point is 18,140, mm, and it has, as of now, it has given a minor blip from around 18,000, and it should pick a momentum to the downside below, sorry, 17,500 if it goes below that, mm, and maximum a halt around 16,800, and maximum I see, as per my reading of the chart, I see 16,300, 400. Right? As people, I have a bit different view that people are saying 14,000 or something. I respect their view, but I don't see this year we will see 14,000. Maybe next year, if recession is fully encapsulating the globe, and before that we may see a new high, maybe later in winter or January or Feb, right? But this downturn should be maximum if it goes 16,200, 400 here till. And if the top, which is people are calling since Friday 18,000 around, if it is a top, recent top, then minimum 34 trading, as I study somewhat time also, minimum 34 trading days, not the general days. Trading days Nifty should be sideways to down, and if it has to do any downside target, which I said, it should be happening in between these period only, like September and maximum. That's it, sir. Thank you. thank you. नीरव भाई बोलिए. Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. Mangalwar tak, I think if we hold 17,550, if it is not broken by Tuesday, I Mm, think that is a point to worry if you are short. mm, Okay, so there is, apart from that, I don't think any view has changed. The view mm, is not good. Nothing is looking good. I don't. People might think it is the best bull market. I don't agree to it. But this is, I mean, I don't find anything bullish per se. Fundamentally, things are looking very bad. Ground reality is very, very bad. Europe, I hope that day doesn't come when the way things are looking right now. Say Germany, they are out of fire. They don't have wood right now. The natural gas prices are shooting like there is no tomorrow. So energy prices have shot up like 8 times across Europe. I don't see where everybody says that things will normalize. Normalization is not. It's not looking to me like anything is going to be normal per se. Hopefully, matlab, Nord is not even they're just operating Nord 1 at 20%. They were going to start Nord 2. Forget Nord 2, Nord 1 is only at 20%. Natural gas prices, I mean, hope they don't double by Christmas. And whose Christmas that will be, that is a big question now. Ah, one thing everybody will agree is that the future is fraught with a lot of uncertainties. It's nearly next to impossible whether markets should do a double down or double up or what. Nobody is aware of what's going to happen. I think we are in a big uncertain times. It would be very good if we keep our positions light and play by the year. I absolutely agree with you, sir. Apart from that, Sharada, if you I don't know. I will not go ahead and I will poke anyone, be it a bear or a bull. I mean, I understand the situation is such that everybody is entitled to have their opinion. But if you look at it in a realistic manner, in a actual ground reality, as per se, things are how. I mean, I understand. See, US is supplying everybody from their reserves. Gas, they are trying to do that. They are trying to control crude.
they are not able to do that in the oil sector, the gas sector. Sorry, the natural gas sector is something that is right now in nobody's hand. It is all in the hand of Mr. Putin, and the kind of, I don't know what stature is EU trying to do at this moment. I mean, they are in this need of, everything that they need is in the hand of Germany as a Russia. I mean, and still the posturing is not right. I have very fundamental question. I mean, if anybody is aware of this, I'm hearing this rumor that the INR is going to be pegged to the dollar. Is What? it the INR will be pegged to the USD? Hey, Bhagwan. Yes, yes, yes. It is okay. I was, yeah. There are the perfect people here. There are the perfect people here to, yeah, I think we should start on this. I think let Deepak speak. No, end of story. There is no chance of that happening. No, no, let's no. This is really a rumor, and let it be a rumor only. It can't translate into a fact. India will go the Indonesia way. Mat karo ye. No chance. चलो दुर्गेश भाई बोलिए. कुमार भाई लेता हूँ. दुर्गेश भाई बोलिए. सर मेरे को तो एशियन पेंट लग रहा है ठुकने का 3,000 के तक आने का लगता है. क्या क्या? एशियन पेंट. एशियन पेंट. एशियन पेंट और कमिंस, ये दो शेयर है ऐसे कि ये लगते हैं कि काफी इनका हो गया रैली. ये काफी बड़ी मात्रा में गिरेंगे यानी हैवी. वो गिरेंगे, वो ये एकदम अलग बात है जी. अपन गलती से भी बेचना मत. अच्छा शेयर कभी बेचने का नहीं. जी सर. आप बहुत नए हो. बेचने के लिए बहुत कचरा पड़ा है, वो कचरे में ढूंढो. एक क्या यार. सर डिक्सन है, फिर डिक्सन से कचरा कौन सा होगा सर? अच्छा है, फिर तो ऊपर भी आया है, काफी बड़ी मात्रा में गिरेगा वो भी फिर. अभी जब तक सामने वाले में ताकत है जी, और तुम्हारे में उतना ताकत नहीं है, बराबर है जी. तो जब भी आपका ताकत उससे बढ़ जावे तब बेच देना. ठीक है सर. निफ्टी सर 17,200 17,300 तक लगता है, और बैंक निफ्टी 38,200 38,000 तक अभी रिसेंट वीक में. जी सर. आई फुल्ली अग्री विथ यू. जी सर, थैंक यू. हाँ कुमार भाई. Well, there are just 2 points for Mr. Nilesh and Mr. Deepak about weakening on Chinese currency. They have admitted that they are into recession, and this is the reason last week they have reduced their interest rates by 10 basis points to 2.75%. Well, and again, I agree with Mr. Sharad Bhai that we are in a lot of troubles. Times are very bad. Apart from oil and gas, whichever, whatever is in scarcity and, which has gone up dramatically, next 1 year, due to climate changes and, the drying up of lakes in America and US and whole of the Europe, we are going to face lot of problems with respect to food, that is agri commodities. That is a one very big area where even US is going to find shortfalls in agri commodities. That's all. Thank you. नहीं कुमार भाई, ये जो आप बोलते हो या सब लोग बोलता है ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो अपने सहन शक्ति बहुत ज्यादा है अपने में वर्ल्ड ओवर. एक क्या होगा, सब पॉइंट्स इकट्ठा होंगे, सब पॉइंट्स, फिर एक ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, कोई किसी को बचाएगा नहीं. दैट इज नोन एज द टिपिंग पॉइंट. ये टिपिंग पॉइंट 1 महीना 2 महीना मैक्स,
उससे ज्यादा दूर नहीं है, उतना मैं समझता हूं। और एक बात समझना भाई साहब, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट इज नॉट एन एसेंशियल आइटम। आप शेयर नहीं लोगे तो घर से निकाल नहीं देगा कोई तुमको। तो टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक टाइम पास है। वास्तव में सब शेयर एक पेड़ा पी होता है, काहे को मगजमारी करे भैया 1 रुपए के ऊपर या नीचे। सो आई टेक दिस गेम एज अ टाइम पास ओनली। We don't add any value. We, yes, we do help in companies raising money, but we are not at that stage okay we are directly involved. We are just a very very small pawn in the game. Play the game, enjoy it, don't take it very seriously. तेजी आएगी, मंदी आएगी, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता। और 12,000 आएगा आएगा आएगा। बोलिए। और अग्रीड किसी सर, को अग्रीड। और किसी को कुछ बोलना है भाई? शरद भाई अभी मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, थैंक यू सो और मच। वो नहीं, वो छोड़ने को आऊं? छोटे वो छोड़ने को आऊं क्या आपको? छोटे गांव नहीं नहीं, छोटे गांव नहीं नहीं, ये नहीं सुनाई नहीं, नहीं दे आप बोले ना मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं बोला रहा। छोड़ने आऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है मैं चाहता हूँ। ओके चलो सर, बाय बाय। ओके। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Deepak sir. बोलो भाई, कोई तो पूछो यार। सर अभी वो एक न्यूज भी आया था आज, अगर आपने पढ़ा है तो नेस्डेक में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव बीन नाउ नेट शॉर्ट ऑन द मार्केट आफ्टर मंथ और सो ऑन फ्राइडे। हम्म, तो अभी कई दिनों के बाद, कई वीक्स के बाद दे हैव नाउ नेट शॉर्ट इन द मार्केट, इंस्टीट्यूशंस इन अमेरिका। हम्म। ये यश भाई को बोलो कुछ बोले, कुछ समझावे हमको लाइफ में। समझ भाई। भेजा भेजा इनवाइट सर। ले ले पकड़ो यश भाई, आओ कुछ बताओ यार, हम लोग तो अनपढ़ है। नहीं पकड़ते हो। गौरव भी जी को भी डाला है, गौरव खरे को भी। अरे पकड़ो नहीं यार। चलो, और कोई भाई? मेरा एक छोटा सा ओपिनियन था। मैं नया हूँ, ग्रुप मेरे को ऐसे ही मिल गया, स्पेस लाइव। मैं ये देख रहा था कि सऊदी जो है वो अग्रेसिवली सब कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है उसके एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। तो अगर हम लोग मतलब जितना हो सके अगर सऊदी के सॉवरेन फंड का इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्ट करना चालू कर दे तो वो कैसा होगा? अच्छा ही होगा। ठीक है, थैंक यू, उतना ही सर। हाँ। डॉक्टर अमित। यस समझ सर। गुड इवनिंग सर। हम्म। हम्म।
गुड इवनिंग सर। थोड़ा लेट ज्वाइन किया। ओके, मार्केट में अभी मैं देख रहा हूँ ये अलग प्रकार का फेज चल रहा है कि जहाँ पे टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों इग्नोर करके बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी पावर दे आर किल लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट। तो यहाँ तो बहुत संभल के रहना पड़ेगा अभी, क्योंकि नहीं फंडामेंटल का जो प्राइस में रिएक्शन हो रहा है, नहीं टेक्निकल का। तो जो लिक्विडिटी जिसके पास है उस हिसाब से वो प्ले कर रहा है मार्केट, और वही देख रहा हूँ अभी तो। अदरवाइज बहुत इसमें काफी टाइम ले चुका है, तो करेक्शन भी ऐसा ही दिख रहा है मुझे भी। तो लास्ट ये वीक के डेटा जो देख रहा था तो काफी चहल पहल है ओपन इंटरेस्ट में, जो एक्सपायरी वीक में दिखाई देता है। तो आई थिंक नेक्स्ट वीक विल बी वेरी वायलेंट बोथ द साइड। स्टॉक स्पेसिफिक इंडेक्स का पता नहीं है क्या होगा। वो भी नीचे की साइड बायस है मेरा, और मेरी एनालिसिस के हिसाब से काफी नीचे जा सकता है नेक्स्ट वीक, मगर दैट इज वेरी डिफिकल्ट इन सच सिनारियो। लिक्विडिटी क्या कर लेगा ये। तो मैं ये देख रहा हूँ कि स्टॉक जो इंडेक्स में नहीं है, मींस इंडेक्स का इन्फ्लुएंस वेटेज थोड़ा कम है, वो स्टॉक में ज्यादा चहल पहल दिखाई देगी। वही ऑब्जर्वेशन दिख रहा है अभी तो, नथिंग अमित एल्स। भाई आवाज ब्रेक हो रहा है। ओह सॉरी, अभी आ रहा है? हाँ आ रहा है, बट आपने क्या बोला वो नहीं समझ में आया। अरे सॉरी यार, मेरा थोड़ा ये ब्लूटूथ का प्रॉब्लम है। ओके, मैं ठीक करके देखता हूँ फिर। एंट्री निकाल दो अमित भाई। ओके, जस्ट अ मिनट। हेलो, आ रही है अभी आवाज? यस 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 यस। तो यही देख रहा हूँ कि लिक्विडिटी ये अलग फेज में अभी मार्केट है, जो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को इग्नोर कर रहा है, और लिक्विडिटी के पावर बेस लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को किल कर रहा है। तो जिसके पास पैसा है वो कंट्रोल में है, तो वो फेज देख रहा हूँ अभी। और डेटा वाइज इस वीक में एक्सपायरी का जो सेटलमेंट होता है उस टाइप का डेटा दिख रहा है। तो नेक्स्ट वीक विल बी वायलेंट स्टॉक स्पेसिफिक। इंडेक्स वाइज आई डोंट नो, उसमें कंफ्यूजन है मुझे भी, मगर स्टॉक स्पेसिफिक जो इंडेक्स में हेवी वेट नहीं है उसमें बहुत चहल पहल रहेगी नेक्स्ट वीक में। तो यही ऑब्जर्वेशन है इस टाइम तो भी। टू ऐड मच। हेलो, थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू अमित भाई। भाई बोलियो ना, पीडी भाई क्या बोलते हैं बाजार के बारे में, दवा हाँ बाजार सर, का। दवा प्रणव भाई बाजार। आपको भेजा है रिक्वेस्ट। प्रणव भाई रिक्वेस्ट भेजा है पीडी भाई। हाँ sir, I just wanted to ask questions on a few stocks, because to be very honest, my broker was recommending, and I get scared when brokers recommend stocks. So if you allow me, can I ask, sir? यस यस। My broker is right now recommending, मेरे को बोलता है अपने बच्चों के लिए M&M Finance और कैनरा बैंक ले लो सर। अभी ये मैं कभी जिंदगी में आई हैव नॉट सीन, सो just wanted to know your views on that, sir. कितना साल का बच्चा लोगे आप? अरे मेरा लड़का 17 साल का है, बेटी सर 20 साल की है। अभी बोलता है उनका और 10-15 साल के बाद उनको गिफ्ट में दे देना बोलता हाँ बराबर है, सही बात है। है। नहीं, 15 साल के बाद यही भाव रहेगा या नीचा रहेगा? क्योंकि सर आज तक अपना इन्वेस्टमेंट सर, माय बिगेस्ट टू पोजीशंस, थ्री इन माय इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सर, आर ट्यूब इन्वेस्टमेंट, BASF एंड INEOS. I have never bought these stocks, so गुड गुड, वेरी गुड। बढ़ते ही रहेंगे।
This is Basov good, INEOS good, Cube Investment good. Very good investments. और जो दवा बाजार का बजाओ ना भाई. दवा बाजार में सर थोड़ा सा चहल पहल वापस शुरू हुआ है. जो मई महीने में एब्सोल्यूट वी वर लुकिंग डाउन द बैरल, इट इज लुकिंग अ बिट बेटर. The e-pharmacy platforms have started releasing purchase orders again. Payments have also not as bad as they were in June. जो मई का पेमेंट सब अटक गया था, जून में थोड़ा बहुत रिलीज नहीं हो रहा था, जुलाई में पेमेंट्स भी थोड़ा बहुत रिलीज हुआ है. The problem is, sir, but the per SKU price, and I don't know this, maybe ED can share a light on this. सर वो आइटम जो जिसका मूवमेंट शुरू हुआ है ना, वो लो प्राइस की है. वो हाई प्राइस्ड आइटम में वापस मतलब मूवमेंट नहीं है. जैसे अगर डव का शैम्पू है सर, एफएमसीजी में मैं करता हूँ, तो पीएनजी का वो 100 ml का बिकता है, वो 200 ml वाला कोई खरीदने को तैयार नहीं. So maybe this is because people are unwilling to spend, are not confident to spend, or they don't have the money. That is not something that is very clear to me. But this is what is basically happening. वो च्यवनप्राश का डब्बा भी 250 ग्राम बिकता है सर, 500 ग्राम बिकता है, 1 किलो का डब्बा किसी को नहीं चाहिए. ऐसा है. So this is quite surprising because there is always lower price SKUs always move in a bigger way, but the higher price SKUs का एक percentage होता है. That percentage is still low compared to its long term क्या जो होना चाहिए. So if EV can come in here, it will be a big help. Easy around. PD is not there, I suppose. Yes. मेन रीजन तो प्रणव भाई एक ही है कि परचेसिंग पावर इज डिक्रीजिंग फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स. कैंसर एंड लिवर ड्रग्स इनका वर्क 15 अगस्त को बोलने वाले थे, ऐसा कुछ आया था गवर्नमेंट में, लेकिन अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ. बट द ड्राफ्ट प्रपोजल इज ऑलरेडी आउट. वो हमारे सबके पास एक कॉपी आई हुई है. पीडी भाई आपका आवाज नहीं आ रहा है बराबर. लिवर के जो प्राइस कैप आएगा, प्राइस कंट्रोल आएगा. ये आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, वो नहीं पता है, लेकिन ये आएगा जरूर. तो अगर people have macro or चलो probably ready for सचिन सालूजा. थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है. सचिन गुड इवनिंग सालूजा. शरद. गुड इवनिंग शरद सर. समाज गुड. अभिषेक. सर अभी मैं एक देख रहा था, रिसेंटली मैंने ट्वीट भी किया था कि जो कल का जो फ्राइडे का प्राइस एक्शन था वो बहुत सिमिलर है 18 जनवरी से. अगर 18 जनवरी को क्या हुआ था कि 27 दिसंबर से लेके 17 जनवरी तक, तो 15 दिन तक निफ्टी अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज नहीं हुए, एक्सेप्ट वन डे विद अ 3 रुपीज एक्सेप्शन, 748 745. सो उसमें तो सेम चीज अभी हुआ है कि 15 दिन तक निफ्टी ने अपने पिछले दिन का लो नहीं तोड़ा. तो उससे क्या है कि लोगों को लग रहा है कि बस अब तो भैया टॉप, मतलब अब तो ऑल टाइम हाई तोड़ेगा और बहुत बुलिश ट्रेंड हो गया. मतलब बेसिकली लोगों के दिमाग से मंदी निकाल रहे हैं कि मंदी तो है ही नहीं बाजार में. ओवरऑल कंडीशन माइट बी बैड बट मंदी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है. और सेम कैंडल बना है. उस टाइम भी 4 दिन का एनगल्फ किया था पिछले, तो इस टाइम भी पिछले 3 दिन का कैंडल एनगल्फ करके और उसने बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया है. तो अगर ये जो हाई लगा फ्राइडे का, जब तक ये नहीं टूटता तब तक तो मंदी है. और मिनिमम 38% जो रिट्रेसमेंट है इसको अपना. और एक और चीज है कि 90% का इसका मतलब ये हो गया कि 90% रिट्रेस कर रहा था. 18,600 के बाद आया 16,800, तो इसका 90% हुआ 18,350. 18,350 से आया 16,200, इसका 90% हुआ 18,100. 18,100 से आया 15,180, तो इसका 90% हो रहा था 17,900. बट इस बार थोड़ा सा ओवरशूट कर गया उससे 70 80 90 पॉइंट. तो ये 90% वाला ट्रेंड मतलब चला आ रहा है पिछली काफी देर से. तो जब तक ये फ्राइडे का जो हाई है ये नहीं टूटता,
So I expect lower levels, मतलब 17,200 17,300 जो 38% रिट्रेसमेंट है, फिर उसके बाद नीचे के लेवल्स खोलते जाएंगे. तो बस यही व्यू है सर. ए सचिन भाई, जी सर. आपका जो ऑब्जर्वेशन है कि जनवरी में ऐसा हुआ था, जी. वो बहुत ही अच्छा है यार. किसी ने बताया नहीं ये पॉइंट. थैंक यू सर. थैंक यू. अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट. थैंक यू सर. और आगे तो क्या होगा क्या मालूम, पर लगता है बाजार घटेगा. जी जी. और बाजार में अभी ताकत नहीं है. जी. एक फटका सहन करने की ताकत नहीं है. जी. और एक गैप अप ही होता रहा था. राइट राइट. उस टाइम भी ये सेम सिनेरियो था. नो अच्छा, वन वाज एक्सपेक्टिंग. नो आई डोंट रिमेम्बर. राइट राइट. उसमें भी काफी सारे गैप्स छोड़ के गया था 18,350 तक. और ड्यूरिंग द डे फिर पूरा टाइम पास करते हैं. गैप अप पे खोल के फिर पूरा दिन टाइम पास. वेरी सचिन गुड. जी, आपका आपका यूएसडी आईएनआर पे क्या है व्यू? सर मैं सही बताऊं तो मैं देखता नहीं करेंसी. मैं सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ. करेंसी पे मैं मतलब देखता ही नहीं मैं उसका चार्ट. गुड. जी जी जी. और निफ्टी का बॉटम क्या लगता है एकदम? सर मेरे हिसाब से तो 14,350 आना चाहिए. क्योंकि जो 38% रिट्रेसमेंट है ये पूरे एंटायर राइज का, वो तो एक बार टेस्ट होना ही चाहिए. क्योंकि अगर ये अभी 14,350 लगा के ऊपर जाता तो मैं रैली को मान सकता था कि ठीक है ये ऑल टाइम हाई तोड़ सकता है. बट ये 15,200 से घूम गया ना, तो मेरे को मतलब बहुत मेरा मतलब हाई कन्विक्शन था कि इसको वापस आना ही है. क्योंकि 38% कोई भी मतलब सस्टेन नहीं कर पाएगा. अगर यहाँ से चला भी जाएगा तो 18.5 19 19.5 से एक बार फिर नीचे आना ही पड़ेगा वापस. क्योंकि वो बॉटम ऐसे नहीं बनता कभी भी. जिस तरह ये बहुत प्यार से बॉटम बना ना, अब आपने वो देखा 23 मार्च को जो बॉटम बना था 2020 7511 का, तो वो हमेशा पैनिक बॉटम बनता है. इतने प्यार से कभी बॉटम नहीं बनता है कि वहां पे आराम से रुक रहा है 2 दिन दे रहा है कि अच्छा आज वो खरीद लो माल मैं ऊपर जा रहा हूँ. ऐसे कभी नहीं बनेगा. पैनिक बॉटम बनेगा जहाँ पे हर बंदा बेयरिश होगा कि भैया बाजार तो खत्म हो जाएगा. वहां पे बॉटम बनेगा. यहाँ पे तो भी मेरे को नहीं लगता ये बॉटम बना है. आज नहीं तो कल अभी टूट जाए, 6 महीने में टूट जाए, कुछ कह नहीं सकते. तो 14,350 तो आना ही है. वो लिख के दे सकता हूँ. गुड. हाँ विशाल भाई बोलिए, पकड़िए विशाल. समझ भाई ले ना हाँ, विशाल. भेजा सर. विशाल भाई आइए. Sir, please give me 5 minutes. I'm outside. Please. ठीक है सर. हाँ, ट्रेडिंग द वेव. थोड़ा आईडी थोड़ा सिंपल करो ना. Sir, IDD is the first alphabet of my name and wave analysis I do with price action, so इसलिए ऐसा लिख दिया सर. बोलिए सर. सर मेरा शरद सर से एक क्वेश्चन है. शरद सर, इफ यू अलाउ मी. हाँ बोलिए ना. सर आपकी बहुत देर से स्पेसेस सुन रहा हूँ, तो आप बहुत बार बोला आपने कि यू लुक एट ब्रोकन बैलेंस शीट ऑफ अ स्टॉक. क्या? कि you said you look at the broken balance sheet of a stock before shorting. हाँ 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 हाँ. तो हाँ सर बोलिए. अभी इन डिटेल तो नहीं, मतलब थोड़ा आइडिया दे सकते हैं कि ब्रोकन बैलेंस शीट क्या है? मतलब जो हम लोग वही देखते हैं, डेट ज्यादा ये ज्यादा, ये तो सब लोग देख लेते हैं. मतलब कुछ एक्स्ट्रा, कुछ प्लस माइनस, कुछ बता सकते हैं आप? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. जो बैलेंस शीट आप पढ़ते हो वही मैं पढ़ता हूँ यार. ओके सर. कुछ एक्स्ट्रा नहीं है.
वो परसेप्शन का पॉइंट है। ओके आपके सर। दिमाग में परसेप्शन कैसा है, ये आंकड़े को लेके आपके दिमाग में क्या क्या विचार आते हैं, तो वो सर फिर इम्पोर्टेंट। परसेप्शन मोस्टली एक्सपीरियंस से बिल्ड होता है, मतलब फिर हमें टाइम लगेगा हाँ अभी। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। या सर एक नचिकेता भाई है, उन्होंने आपको थैंक यू बोला है। ही हैज अर्नड अराउंड 5 डिजिट प्रॉफिट इन द लास्ट 15 days शॉर्टिंग 2 stocks। तो आपको थैंक यू बोला है सर उन्होंने। थैंक यू से क्या होएगा, तो वो थोड़ा पैसा भेजो। देख, और बोल भाई। विशाल भाई बाकी है, डीजे को मैंने भेजा है। डीजे को लो ना, डीजे को। प्रशांत भाई को भी लो ना, डॉक्टर प्रशांत मलिक को। प्रशांत जी। मेरे को नहीं दिखते वो, और वो आएंगे भी नहीं, कई बार आते हैं बट वो आते नहीं अब है स्पीकर में आगे। कारा कारा डीजे कारा। एक तो वो ऐसा डॉन लगता है ना सच्ची। कारा भाई ऐसा लगता है Hello. पूरी दुनिया उसके। हाँ। Hey, good evening, everyone. Sorry, I wasn't able to join. पूरी। I was out and I'm driving या right नो। now. अच्छा। क्या डिस्कशन चल रही है सर? वेरी गुड। कुछ नहीं, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या होगा। अभी मंडे को तो नीचे जाएगा, फिर थोड़ा अच्छा फॉल हो जाए, थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि कहाँ है ट्रेंड मार्केट का ओवरऑल। लग तो रहा है बहुत गंदी सेलिंग हुई थी मंडे को, सॉरी फ्राइडे को। So let's see if it continues. And there was always something fishy about this rally. ये जो DII लोग थे, ये कंटिन्यूसली बहुत नीचे लेवल से they had been accumulating shorts. For some reason, they knew something that everybody else didn't know. And FIs were buying and they were shorting, which was the opposite of what had happened a few months back. And now FI also started shorting on Friday. FI is short, DI is short, client is retail is long. So Monday, definitely there has to be a fall. Not definitely, I never like to use that word, but highly likely. And then at some point, I'm thinking these DIs will also cover their short. So markets could be volatile this week. We could see downside DIA covering shorts and all. So then we'll see how the market looks this week. Always good to get a weekly confirmation after a good day of selling. Yeah, but I don't see any reason for a major upside. I mean, there is no underlying reasoning, and neither is liquidity a big factor right now. So yeah, just on a, we'll just keep watch of what happens next week and see where it goes. उसमें सर एक लेम डेक का कन्विक्शन ये लोग बोलते हैं कि दे हैव सोल्ड 2,78,000 crores FII। नाउ दे हैव bought around 17,000 odd crores from the bottom। So if they invest the whole chunk which they have sold, if they bought it right now, so what will happen? So I told one guy, it will be Nifty will be 2 lakh then, and Sensex will be around 5 lakh। सो समर्थ भाई, ये जो डेटा है, ये डेटा से ये पता चल रहा है कि ये जो अपमूव आया है, दिस हैज बीन प्योरली
the up move, the major participation has not been there. The retail, a lot of people have been left out in this entire up move. People kept waiting, people kept shorting, और DJ also said कि नीचे से सर देखो 2800 पॉइंट के आसपास का रैली हुआ है. इट हैज बीन अ सेक्युलर अप मूव इन द मार्केट्स. तो थोड़ा बहुत तो भागता घोड़ा सांस तो लेता ही है. अब सांस ले रहा है, ये रैली थमी है, नीचे यहाँ से करेक्शन होगा, वेदर द there would be a trend reversal or whether this is just a minor correction for next 2-3 days, only time will tell. But on the whole सर अभी फ्राइडे का जो सेलिंग आया है was टिपिकली काफी स्टॉक्स बीटन डाउन हुए हैं. तो एक्सपेक्टिंग some sort of volatility in the markets. कुछ स्टॉक्स जैसे लास्ट बेसिस में भी सर बता रहा था कि पीवीआर वी वर बेरिश. तो पीवीआर सर यहाँ से भी लगता है कि और करेक्शन आएगा यहाँ पे पीवीआर के अंदर. पीवीआर इज वन स्टॉक which I feel we can see more further downside in PVR. I think cement is one sector which needs to be watched out because a lot of cement sector seems to be highly overbought right now, given that ये अदानी का एसीसी और अंबुजा को लेके जो अप मूव आया, और आई थिंक फ्राइडे को जो प्राइसेस सीसीआई ने दिए हैं, आई मीन अदानी ने कोट किए हैं अराउंड 380 रुपीज, और अंबुजा तो मंडे को लगता है कि सर ये स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा. लेट्स सी हाउ थिंग्स शेप अप ओवर देयर. बाकी जैसे शरद सर कहते हैं बिल्कुल सही है कि बाजार के अंदर सिंपल है, जो चीज भाग रही है उसको खरीदो, जो चीज गिर रही है उसको बेचो. वेरी सिंपल. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है मार्केट में. जो भागता है वो दौड़ता है, जो गिरता है वो टूटता है. दैट इज अ सिंपल सम रूल इन द मार्केट. Top three, you pick up top three stocks which are falling, which are the most corrected in a given day. You will see them, probability of them going down further would always be much higher. So ये है चीज. शरद सर, any view on Adani Group now? बढ़ेगा, ऊपर जाएगा. Right. छेड़ना मत. And sir, stocks like IEX, खराब न्यूज आया, कुछ नेगेटिविटी आया, फिर देन नहीं, उसमें एक दो ऑपरेटर हो गए हैं, वो ठीक है यार, छोड़ो उसको 90 के नीचे बेचना, बहुत पैसा मिलेगा. राइट सर, राइट. इनफैक्ट सर वो देखो ना मुथूट के अंदर क्या हुआ, वो अच्छा खासा अप मूव आया एंड देन लुक एट हाउ दैट स्टॉक गॉट बीटन डाउन. तो व्हेन अ स्टॉक इज हेल्ड विद, मतलब वो ऑपरेटेड स्टॉक्स होते हैं, तो उसमें क्लोजली हेल्ड स्टॉक्स होते हैं, तो उसमें इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ गेस. आई मीन वॉट एवर इज ऑब्वियस विल ऑब्वियसली नॉट हैपन. वो वाला चीज हो जाता है ऐसे स्टॉक्स में सर. नहीं, अभी तो वो ढीला पड़ गया है, खत्म हो गया. सर यू हैव बीन कंसिस्टेंटली बेरिश ऑन लाल पैथ, तो सर क्या लगता है अभी यहाँ से? खराब ही लगता है, वो भाव ऊपर है तो क्या हो गया. राइट सर. और शरद सर, एनी सेक्टर इन टर्म्स ऑफ जो अभी यहाँ पे लगता है कि काफी यहाँ से अगर ये मार्केट में करेक्शन आती है, तो एनी पर्टिकुलर सेक्टर विच विल अगेन गेट बैटर्ड बिग टाइम? प्रॉब्ली आईटी एक सेक्टर वापस से लग रहा है सर, जो उसके अंदर पुल बैक आना था वो आ गया. फ्राइडे को डाउ ने भी काफी, डाउ नहीं, नैस्डैक ने भी काफी वीकनेस दिखाया है. डू यू फील दैट फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग विल स्टार्ट इन आईटी सेक्टर? हाँ, वो विप्रो ही बेच दो ना, कुछ नहीं उसमें. विप्रो, एचसीएल टेक? नहीं, विप्रो बेचो खास करके, बहुत खराब है. राइट सर. और लेने में है ना, ये अडानी एंटरप्राइज, अंबुजा सीमेंट और पीएल और पीरामल एंटरप्राइज. बोलियो. राइट सर. सर रियलिटी स्टॉक्स के ऊपर क्या ध्यान बैठ रहा है? बोगस है.
वो चलेंगे ही नहीं जिंदगी में, रियलिटी स्टॉक चलेंगे ही नहीं। आप अमेरिका वगैरह सब देख लो, कोई नहीं चलता है। सर बाकी एक एक वो बाजार का थंब रूल है, वो मेरे को कोई फोन करके जब बोलता है ना सुजलॉन ले लो, तो समझ लो बाजार के अंदर करेक्शन चालू हो गया, तो होने वाला है। तो वी आर क्लोज टू द टॉप। तो लास्ट वीक में ही सर 2 लोगों का फोन आया कि सुजलॉन लेके रखने का अच्छा लगता है। हाँ तो क्या है, जब ये कचरा चलने लगता है तो इट इज टाइम टू सेल। यस, ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। And समझ sir, and one thing, sir, Berkshire Hathaway is big time bullish on crude. They have bought one Occidental Petroleum Corporation. They have bought around 50% stake in that company. So they are big time bullish on Chevron में तो है ही already stake, but now अभी एक पूरा company का stake ही ले लिया है 50%. और बक्सायर का तो आज शेयर डाउन है। हाँ, उन्होंने तो लॉस बुक किया है सर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो लॉस ही है। और छोड़ो ना यार, एक आदमी से क्या होता है, कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है। सर बहुत यार नीरव भगवान भाई, है बस। यार नीरव भाई, नीरव भाई आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? सर अभी एक आईटी छोड़ के which other sector do you think can correct big time? आई डोंट नो यार। Nothing apart from IT. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखा नहीं है, और क्या देखने का है। वही यार, 1.5-2 साल से वही 188 स्टॉक है, क्या रोज देखने का, क्या सेक्टर है। वो घिसा पीटा रिकॉर्ड है, चलते रहता। समर्थ और कोई है क्या भाई? नहीं सर, और कुछ नहीं है सर। तो बंद कर देते। यस सर।